हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड सेम का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, जिसमें से मेरा अभी सेकंड सेम है PGDCA कोर्स का प्रोग्राम का, राइट। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं हम दिखा देते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। 206, 207, 208, 9 एंड 10, ठीक है। ये MCS का 206 से लेकर लैब के साथ 9 एंड 10, ओके। सो 206 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एंड इसका लैब एंड DBMS इन जावा लैब, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 206 से, जिसमें है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। जैसे फर्स्ट सेम में हम ब्लॉक वाइज अपना सारा पढ़े थे, इस सेम में भी वैसे ही करेंगे। सो इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा में जावा फंडामेंटल्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, पैकेजेस, मल्टी थ्रेडिंग, आईओ है, ठीक है। एंड ब्लॉक 1 में ईच ब्लॉक में 4 यूनिट है। तो ये फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। इसके पहले हम एक बार अपना क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। अगर यहाँ पे जाके देखें, ये मेरा है जून 2024 का क्वेश्चन, जिसमें क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज क्लास, हाउ अ क्लास इज डिफाइंड इन जावा, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लासेस, व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर, एक्सप्लेन जावा प्रोग्राम विच टेक रेडियस ऑफ द सर्कल एज इंपोर्टेंट डिस्प्ले एरिया, ऐसे कुछ प्रोग्राम है। इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आया है। फाइल क्लास जावा में क्या है, असर्शन क्या है, JDBC क्या है, एंड राइट अ प्रोजेक्ट यूज स्विच केस एंड ब्रेक, ये सारा है, ओके समझ गए। व्हाट आर द वेरियस स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग JDBC, कुछ तो है, पढ़ना पड़ेगा, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। एंड GUI प्रोग्रामिंग क्या है, एंड सो शॉर्ट नोट्स में भी मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, एडिंग इन जावा, ठीक है। ये तो पता चल गया। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, ये जून 2024 का था, ये देखते हैं दिसंबर 2023 में, ठीक है। Briefly discuss the concept of dynamic binding with a suitable example, right? Illustrate the example while loop and do while loop with suitable code in Java, ठीक है। What are the area specifiers? Compare hierarchical inheritance and what are क्या है inheritance in Java, override, suppress warning, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इनहेरिटेंस, शॉर्ट नोट्स में कुछ आ जाता है। वेक्टर क्लास, AWT या कुछ पता चला। DBMS, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, DBMS हाउ इज मेंटेन, ओके, ठीक है। ये सारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन टू जावा में क्या क्या है। Object and class, data hiding, abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, and then features of Java programming language, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यूज ऑफ जावा इन इंडस्ट्री, जावा डेवलपमेंट केस, दीज आर। सो अब पूरा PDF यहाँ से नहीं पढ़ सकते, इसलिए मेरे पास कुछ शॉर्ट्स नोट्स जैसा मतलब उन सब का बहुत सारा मीनिंग निकाल के, बहुत सारा मतलब थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखे हैं ताकि भी पूरा PDF पढ़ना ना पड़े। एक्सप्लेनेशन तो जावा में देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल, जावा इज अ मॉडर्न हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन विद अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग, स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन लाइब्रेरीज दैट हेल्प्स डेटाबेस नेटवर्क एंड GUI प्रोग्रामिंग, ओके। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है समझना। जावा इज लाइक अ टूल बॉक्स फुल ऑफ रेडीमेड टूल्स libraries that makes programming task easier. It is object oriented, meaning it thinks like human in object and class, similar to how to see real world things, right? Real life example, step by step. Imagine you are designing an online shopping app. Each thing like customer, product, car, these can be seen as an object in Java. Shopping cart के object in Java में customer, product, car, seems these are object in Java. These objects interacts, customer adds product to card. Java handles it throughout classes and methods. Because of Java, write once runs anywhere idea came up, and some app can run on Windows, Mac and without rewriting code, okay. Key points to remember for exam: key developed by James Gosling at Sun Microsystem 1990. First is used to call Oak. First version Java was 1995 with motto write once run anywhere. Latest version is 2022 का है. Java is used in Android, web apps and there.
Features like garbage collection, portability, and robustness make it powerful. Development kits JDKJREJVM that helps program run. Okay. Introduction to object oriented program में OPS में क्या आ जा रहा है? OPS in Java meaning writing program using classes and objects just like how we deal with real world things. Object and class definition. A object is a real world entity with identity, state, and behavior. A class is a blueprint or a template that defines what data or behavior its objects will have. Object is a real world entity with identity, state, behavior. A class is a blueprint or template that defines what data and behavior its object will have. Okay. इसको just repeat and again in a cool mind, it make you understand better. ठीक है. Now next simple example to understand this. Imagine a class. It is a car. Car is a class. This means blueprint defines data and actions. Data fields like states. ठीक है. डेटास की बात करें तो ब्लूप्रिंट कार है. कार में डेटास की बात करें तो कलर, ब्रांड एंड मॉडल, दीज आर द स्टेट्स. एंड बिहेवियर मेथड्स, विच इज बिहेवियर मतलब स्टार्ट, स्टॉप्स, एक्सेलरेट, दीज आर द मेथड्स. ऑब्जेक्ट माई कार, अ रेड होंडा सिविक दैट कैन स्टार्ट एंड स्टॉप, दीज आर द फुल फंक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. Now class equal to design plan, object equal to actual car built from that plan. Shortcut to remember this: class is a plan, object is a product. Now in this, what is this PDF is telling? Introduction में कहा जा रहा है object and class, then data hiding, abstraction, encapsulations, inheritance, polymorphism. These are some topics we are covering in introduction of OOP. And now data hiding के बारे देखते हैं. Hiding, okay. It protects data from outside interference by making variables private and controlling access through get and set method. Get and set method से क्या करता है? It protects data from outside interference by making variables private and controlling access through get and set. Okay. Real life example क्या? ATM machine. You can't see or touch it. Bank internal data balance. Okay. You can only access it through secure buttons like get balance or withdraw. So your balance is hidden and you only interact through safe methods. Shortcuts: hide data, give limited access. ठीक है. Now it समझ में आ गया कि डेटा हाइडिंग में क्या करना है. Hide data, give limited access. You can't see and touch the bank's internal data. You only access it through the get like buttons, na? Which helps you to get balance, withdraw and know about everything about your account. ठीक है. इंटरनल कुछ नहीं कर सकते, वो हो गया. एक बार फिर से पढ़ लेते. डेटा हाइडिंग का डेफिनेशन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय मेकिंग वेरिएबल्स प्राइवेट एंड कंट्रोलिंग एक्सेस थ्रू get and set method. Abstraction hide complex details and shows only what is necessary. ठीक है. When you drive a car, you just use the steering wheels and pedals. You won't worry about how the engine burn fuel. Similarly, Java system.out.println. Hi, print text, but we don't see the complex code behind it. So essential hide complexity. इसका शॉर्टकट है कि so essential hide complexity. Next, encapsulation meaning binding data and method together in one unit. Encapsulation meaning binding data and methods together in one data and methods together in one unit class, and restricting actions using private get and set. Real life example: think of a capsule method. The ingredients: data are sealed inside, only doctors know how to use it safely. in Java में भी वही चीज है. शॉर्टकट है कैप्सूल. डेटा प्लस कोड पैक टुगेदर. ठीक है. इसका डेफिनेशन एक बार फिर अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पे बस नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं. Data plus code packed together. This can be a shortcut way to remember encapsulation. Inheritance allow one class to use properties or method of another class. It can be its parents and can be anything on top of the child. Okay. Supports code reusability, like a car inherits from four-wheeler. Four-wheeler has engine, gear, steering. Car adds AC, airbags, music system.
So car gets feature of 4 wheels plus its own feature. Okay, inheritance. It gets feature from its parent and also it has its own feature as well. तो ये आ गया inheritance का. Child gets features from parent. Yes, this is the same way to make like remember. Now moving to the next, which is a polymorphism. Polymorphism means many forms, same function name, different behavior based on the object or situation. Again, polymorphism means many forms, same function name, different behaviors on the object or situations. Polymorphism means many forms, means the same name, function name, different behavior based on the okay. Name is the same but behave different. Like think of example. Think of the word draw. Draw means you is telling you to draw. Draw what? Circle, rectangle. Okay? Triangle. These are the methods means it is telling you, but draw is the same, which is इसका मतलब बोल रहा polymorphism. Draw तो बोल रहा but क्या ऐसे बोल सकते drink water, so points it's going to the water. Drink milk, तो it's showing you drink तो है but what milk. This is called the polymorphism. Two types, इसमें भी दो types है, compile time static and run time dynamic. Okay. Method overloading. Example add int and add double double decided at compile time. And यहाँ पे run time dynamic overriding. Example animal dot speak dog says bark cats. Okay, animal it can be bark. If it is about dog then it bark. If it is about cat then it's to meow. Okay, decided at run time. Predefined नहीं, decided at run time. वो कि क्या बोल रहा है. One name many actions. Next quick revision. ओके इसको मूव करके यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे इसका इस शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है. Introduction to object-oriented programming definition. An object is nothing but a real-world entity that can be distinctly identified. Object possess their own characteristics and features. A class is a template or blueprint that define data fields and method of object of the same time. Object have states and behavior while a class describe the behavior state and object. A class is a template or blueprint that define data fields and method of the object of the same type. Object have states and behaviors while a class describe the behavior. Data hiding is one of the key aspects of object-oriented programming that enables developer to protect their data and hide the implementation data details from outside interference. To implement data hiding, variables in a class should have a private access modifier and can be accessed or modified using get and set method. Abstraction. Data abstraction is a process of hiding details information and only presenting the essential information to the user. Data abstraction is the process of hiding details information and only presenting the essential information to the user. In Java programming, abstraction can be achieved by using abstract class and interface. It helps to separate the use of method from its implementation. Again, data abstraction is a process of hiding details and only presenting the essential information to the user. In Java programming, abstraction can be achieved by using abstract class and interference. It helps to separate the use of a method from its implementation. ठीक है, इसका कोड किस तरह से लगता है ये हम लोग बाद में देखेंगे. अभी just we are learning about definition, what is work, what it does. Encapsulation is a process of binding the data member and method together in a secure manner by making the data fields accessible only to the class member throughout private declaration. Setter and getter help used to ensure read-only and write-only operations. Inheritance provides reusability by inheriting the properties and method of one class into another. It allows the creation of a new class similar to a previously defined class while adding its own feature. The original class is called the super parent class and the new class is called the subclass. Polymorphism is the ability of an object to make many forms. It allows one interface to be used to a general class of action. Polymorphism is the ability of an object to make many forms.
It allows one interface to be used as a general class of action. In Java, polymorphism is implemented through method overloading and method overriding. It has two types, static and dynamic. Static is about compile time and dynamic is the runtime. Next ये हो गया feature of Java में देखते हैं object oriented, simple, secure, portable है, code सोर्स कोड पोर्टेबिलिटी है, सीपीयू आर्किटेक्चर पोर्टेबिलिटी है, जीयूआई है, नहीं इसके अंदर है, पोर्टेबल में ये हो जा रहा, रॉबस्ट है, मल्टी थ्रेड है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, इंटरप्रेटर हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनामिक। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जावा। चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। Java is based on class and object. Everything is modeled as object, data plus behavior. ठीक है, स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट नेम्स विद रोल नंबर। सिंपल में क्या है, जावा इज डिजाइन टू बी इजी टू लर्न एंड राइट विद अ क्लियर यूजर फ्रेंडली सिंटैक्स। ठीक है, सिक्योर, जावा प्रोवाइड सिक्योरिटी, no explicit pointer runs in JVM and thus portable. Java bytecode runs on any platform with JVM, write once run anywhere का फंडा है। Robust है, Java emphasize reliability via strong memory management and execution. Example, automatic garbage collection, removes unused object exceptions, handle errors like file not found. Multi-thread, Java supports multiple threads so a program can do many tasks simultaneously. Supports multiple threads so a program can do many tasks simultaneously. Architecture neutral, Java produce platform implemented bytecode that runs on JVM regardless. मतलब आर्किटेक्चर न्यूट्रल में क्या बोल रहा है, बाइटकोड इज लाइक अ यूनिवर्सल रेसिपी है। नहीं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेटेड हाई परफॉर्मेंस बीट कोड इज इंटरप्रेटेड बाय JVM JIT compilers convert hot code to native for performance. Distributed, Java has built-in support for distributed computing. Java has built-in support for distributing computing network RMI. ठीक है, a client app can call a method on a server object to fetch remote data. Java has a built-in support to distributed computing. Okay, Java supports runtime dynamic है, Java supports runtime linking, class loading and reflection. Code can be inspected and loaded at a time. Okay, next, ये सारा इसका जो फीचर्स है वो पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब बोल दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिंपल है, सिक्योर है, पोर्टेबल है, एंड देन रॉबस्ट है, मेन मल्टी थ्रेडेड है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल इज दिस, इंटरप्रेटेड हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड इज डायनामिक एज वेल। यूज ऑफ जावा इन द इंडस्ट्री। ओके, use of Java in this IT industry support. Java is widely used in IT industries for developing and maintaining software system. Example, combine use of Java interprets web app and backend server. Web application, Java is used to create web apps that handles HTTP request and response. Okay. Big data, Java powers big data tools like Hadoop. I have never heard about it. I will check this out later. Used for storing and processing large data sets. Scientific application, Java is used in research and scientific tool. Okay. Simulators like CloudSim used to cloud computing experiments are written in Java. Web mobile app, Java is used to build both web and Android apps like Twitter, Opera Mini, Signal, Wikipedia search, all built using Java. Okay, moving to the next, which is Java Development Environment and Tool. Java Development Environment Tool, Java Development Kit, JDK. JDK is complete package and used for develop Java application. Excludes JRE, Java Runtime Environment. Example, when you install Java on your system, you install JDK to write sim and compile and run program. Java Runtime Environment. ओके, इसको एक बार देख लेते हैं। JDK, Java Development Kit is complete package used to develop Java application. It introduces JRE. When you install Java on your system, you install JDK to write, compile and run program. Yes. Java Runtime Environment, Java provides all libraries and resources needed to run Java program.
It includes JVM, class libraries and class folder. Okay, ठीक है. Java virtual machine. JVM is a virtual machine that runs Java bytecode on the computer. It makes Java program independent. JIT definition. JIT is a part of JVM, converts bytecode into machine code at runtime to make programs run faster. It compiles frequently used part of the code. When a Java app runs repeatedly, JIT helps it run faster. सिंपल फ्लो क्या है? राइट सोर्स कोड, कंपाइल विद जावा कंपाइलर, जेवीएम एग्जीक्यूट बाइट कोड. अगेन इसको एक बार देखें ना. जावा डेवलपमेंट की टूल, तो जेडीके कंप्लीट पैकेज यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशन. नेक्स्ट जेआरई provides all libraries and resources needed to run Java program. Virtual machine that runs Java bytecode on your computer. Part of JVM that converts bytecode into machine code. ठीक है, ये हो गया. Environment setup of Java application development. Write a simple Java program. You can write code using Notepad and anything anywhere else. Meaning of important keyword. Class used for declare a class. Blueprint. ठीक है. Public makes method visible to everyone. Static belongs to class not object. Void means nothing. Method return no value. Main entry point of the program. String this used for command line input. String is used for command line input. System print system on the screen. देख लो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि राइटिंग सिंपल इन्वायरमेंट सेटअप जावा के लिए और सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जो भी होते हैं ना, उसका क्या मतलब है. तो दिस इज द फुल्ली वे टू क्लास वेलकम एंड मेक्स योर वेलकम नाम से ही यू हैव टू क्रिएट द फाइल. ओके, जावा फाइल. पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन आर्ग्यूमेंट के अंदर में क्या है एंड व्हाट आर ऑल दीज. सो क्लास यूज फॉर डिक्लेयर अ क्लास. पब्लिक मेक्स method visible everywhere. Static belongs to class. Void means nothing. Value main entry point of program. Use for command line input. ये प्रिंट करता है. ठीक है. सेव फाइल एज दिस. कंपाइल जावा वेलकम एंड रन जावा वेलकम आउटपुट. Using IDE integrated development. Instead of trying typing commands, you can use IDE tool for writing, compile and runtime. Free and popular Java IDE used for widely industry. Example, new project, new class and this are the. ठीक है, ये इसको छोड़ते हैं. अब पढ़ते हैं, नहीं right to left इसको भी कर लेते. क्या है? Using IDE instead of typing है तो पढ़ लेते हैं. NetBeans IDE open source IDE for ये क्या open source IDE for Java development. Supports latest Java versions. Provides graphical interface, project management and debugging. Code completion, subject method automatically, resource management, manage libraries and files. Debugging tools help find and fix error. Compile, translate code to machine language. Advantages of IDE. खत्म हो रहा है ये यूनिट, यहाँ पे देख लेते हैं. IDE का एडवांटेजेस क्या है? सेव टाइम एंड एफर्ट ऑब्वियसली. ठीक है, IDE से सेव टाइम एंड इतना एफर्ट से लिखने वन बाय वन लिख नहीं सकते, वो खुद ही जनरेट कर देता है, पॉपुलर कर देता है. Saves time and effort. IDE makes development faster with tools, shortcuts and error prevention. Okay, autocomplete जो रहता है उसकी मदद से. Enforce standards. Provides a uniform development environment for all program of a team, right? Project management. Helps organize projects, resources and documentation. Done. यहाँ था advantages of IDE. टाइम बचाता है, एफर्ट करता है. इन्फोसिस टेबल्स का मतलब होता है प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर ऑल. एग्जांपल शेयर टेम्पलेट्स एंड कोड लाइब्रेरीज इंश्योर्स एवरीवन फॉलोज द सेम स्टाइल. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट रिसोर्सेज. दीज आर ऑल अबाउट यूनिट 1.
ठीक है। अब यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में वी विल लर्न अबाउट डेटा टाइप्स, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, अभी आई थिंक मैंने इसको नहीं किया है, यस, सो ओके, मैं ये कर रही हूँ, तो ये कंप्लीट करके आई विल बैक अगेन, आई विल लर्न। फर्स्टली हम इसको शॉर्ट में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, देन आई विल रिपीट एंड आई विल शेयर इट ऑन यूट्यूब सो अदर्स कैन ऑल्सो गेट हेल्प। Okay, this is all about unit 1. Bye guys.